guys, I'm at the gym now. So I'll try and record what I can. Okay. Right now I'm starting my cardio. So I'll be doing Stairmaster for about 5-10 minutes and then we'll be walking. Actually I'll be walking first and then doing Stairmaster. So I'll see you. वर्कआउट्स ओवर एंड एज यू ऑल सॉ आई डिड लेग्स बहुत ज़्यादा टफ लगा आज मुझे. लेग्स वाज अ किलर फॉर मी बट वीक में 2 times लेग्स करूँगी मैं एंड होपफुली द सेकेंड डे वुड बी बेटर. द सेकेंड टाइम आई वर्क आउट ऑन माई लेग्स वुड बी बेटर. Right now I'm too exhausted to even talk. So yes, I'm gonna go home, have my protein and then catch up. Coming for some makeover. So I'm getting my hair recolored, retouched, and let's see how it turns out. So waiting for my color to show up. उसने अभी कलर लगा दिया है और अब मुझे about half an hour wait करना है. So yes, I'll see you after the wash. The never ending wait. अभी तक hair wash नहीं हुआ है. And Zen is up. And he's with my dad. He's playing thankfully. अभी जब hair wash होगा then मैं आपको दिखाऊंगी. अभी मेरी मॉम का चल रहा है. Who is this? Arrogant dude. This is the final look, guys. So guys, that was pretty much it from my day and I'm ending with this nighttime feed. Also, my sister's getting married, so my next vlogs would probably be around that. So no gym for a few days. I'll try and squeeze out a little time in between. Yeah, so hi everyone. अभी रात के करीब 1:40 हो रहा है अभी का टाइम and just look at my hair and that's my brother sleeping. Anyway, मैंने बहुत टाइम बाद अपने बाल इतने डार्क कलर के देखे हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट मेरे बालों में एक हमेशा एक लाइट ब्राउन टिंज रहता था. अभी बहुत डार्क कर दिए फॉर अ रीज़न बिकॉज़ थोड़े टाइम पहले मैंने बालियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करा था एंड व्हाट द हेयर ड्रेसर डिड वाज विदाउट इन्फॉर्मिंग मी ही प्री लाइटन्ड माई हेयर एंड आई वुड नेवर डू दैट. मैं हमेशा हेयर ड्रेसर को बोलती हूँ कि आप जो भी कलर करो बस ब्लीच मत करना. सो ही डिड दैट विदाउट माई परमिशन and still he would say that I have just added a light blonde shade which was required for the kind of balayage I wanted. Over time भी क्या कुछ दिनों बाद ही when my mom saw like the day I got it done, she said मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कलर, it's somehow not suiting and I would not just say that it's genuinely not looking nice. And then I started feeling low about myself. I felt like I look like some chapri. I mean that I just did not like the look. And then I got it covered. I went to the same guy and I said, listen, I know you bleached my hair. I want you to do something about it because I'm not liking this yellow color. It looked very grassy. So he colored it. He did not charge me anything, and it he kind of gave me a chocolatey hair color which looked really good. After that
in about 2 months the same hair color faded, and then I went to another very renowned hairstylist, and he gave me an excellent color which was again chocolatey and peanut buttery, and I don't know how to define that color because he mixes 2-3 shades to kind of give the desired color. So anyway, I was about 6 months pregnant when I got that done, and soon after I got chickenpox. After that I had a lot of growth और मेरे बहुत roots आ गए थे, और यहाँ तक बाल black थे, उसके नीचे brown, उसके नीचे yellow, because वो प्री लाइटनिंग कभी आपका जाता नहीं है, वो लेंथ के साथ ही कटता है. So the hairdresser that I went to abhi recently was the one who colored my hair before I got married and during my roka period. So yeah, so he said I have to tone down your hair color so that your the bleach thing could be settled, the yellow. And my hair had become very grassy and बहुत tangle होने लगे थे. Every time I would like comb my fingers through my hair, it would not feel nice, and it just did not feel good, and it did not look good. And also I have my sister's wedding, so I just needed this change. And now I have never had this dark hair in the longest time, and I feel like this is a good, like, refreshing change in a long time, because most of the people have seen me in that light brown hair, and a lot of them thought that that is my original hair color, which is not, and I wish it was, but it's not. This kind of looks very close to my real hair color. So yeah, abhi to lag bhi nahi raha hoga. Anyway, I'm here for a little chit chat. So I worked on legs today, and it felt like the first time I would have ever stepped into a gym. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एक टाइम पे बहुत हैवी लिफ्ट करती थी. बल्गेरियन स्क्वाट्स एक तरह के स्क्वाट्स होते हैं जहाँ पे आपके पैर एक बेंच पे रखे होते हैं, एंड द अदर लेग इज़ इन काइंड ऑफ अ लंज पोजिशन, एंड यू स्क्वाट योर लेग्स. तो उसमें मेरे पैर शिवर करने लगे, एंड आई जस्ट हैड 2.5 kgs इन माई हैंड. आई वॉज लाइक आई कांट डू इट. इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. फिर मैंने वेट्स छोड़े, और फिर मैंने खाली करा, फ्री बल्गेरियन स्क्वाट्स करे विदाउट एनी वेट्स. थोड़े से हो पाए, अगेन माई लेग स्टार्टेड शिवरिंग. तो ऐसा नहीं है कि इवन दो आई हैव बिन लिफ्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, आफ्टर डिलीवरी योर फिटनेस गेम रियली चेंजेस. एंड अब सीरियसली स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट माई यूट्रस इज स्टिल हीलिंग एंड आई कांट गो हैवी. Although I really, it is a temptation. If you are somebody who lifts weights, you'll get me. It is a temptation to hit your RM, to just start lifting the kind of weights you have always been lifting. And पर यहाँ पे ego lifting बिल्कुल भी नहीं करनी है, try भी नहीं करना है ऐसा कुछ which could put you at any sort of risk. पहले तो recover होना है. I'm only working out to kind of start getting some strength in my body, because right now what I realize is that I'm really loose. So yeah, मैंने आज जो मैंने legs hit करे, उसमें मैंने जैसे squats करा, फिर squats के साथ साथ like उस break में I would do 1 minute of walking and then back to squats and walking. तो ये circuit मैंने 3 times करा, as many reps as possible. Without weights तो मैं 20-25 करती हूँ. With weights I just kind of stick to 10 to 12, और जितनी भी मेरी body permit करती है. I don't like force myself. I don't kind of go for the one extra repetition thing which usually I would do, because I really have to listen to my body at this point in time. I cannot like risk any injury. I have a small baby to look after, so you have to be very careful about yourself. Also मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं अपने आप को लेकर. तो ये जो बॉडी इश्यूज़ हैं, ये बचपन से लेके टीनेज लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कुछ हद तक बॉडी शेमिंग की वजह से है. बट दैट्स नॉट द स्टोरी आई विल कवर इन अदर वीडियो. अभी बस यही है कि
really understand when if you see yourself in the mirror and you kind of don't recognize yourself, that is scary. And अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी खुद की बॉडी में हूँ नहीं, मैं किसी और की बॉडी में हूँ, and I want to change that. I don't want to sit and cry about looking the way I'm looking right now, and I have the excuse of ridiculous job that my body has been made for. तो इसीलिए मैं थोड़ी खुश हूँ, but at the same time there is a girl inside me which is sad. So pregnancy में I kind of gained about 18 to 19 kgs, which was absolutely my fault. I was borderline gestational. I had borderline gestational diabetes, and I was not allowed to have anything which was sweet because it could risk the baby. But human minds, तो आपको जो चीज़ रिस्ट्रिक्ट की जाती है वही आपका मन सबसे ज़्यादा करता है खाने का. एंड इन माई केस आई वॉज रियली क्रेविंग स्वीट. तो मैंने बहुत छोटी छोटी चॉकलेट्स खाई, बहुत जंक फूड खाया. एंड दिस primarily I think also came from the kind of control I had over myself all these years and restriction. I ate all sorts of junk food. I let myself take the advantage of being pregnant and like eating all sorts of junk food possible, all sorts of things that I would never even look at or smell even. So I ate all of that, and then that led to this weight. So I think ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये वेट शेड करने में. Immediately after the delivery I lost about 7 kgs, and then I again went to the doctor and I had put on 2 kgs which I did not. तो इंडियन मेंटालिटी होती है कि घी खाओ घी खाओ घी खाओ घी खाओ एवरीवेयर, एवरी इंडियन फैमिली. बट घी एक लिमिट तक ही आपकी बॉडी को आपको खाना चाहिए, एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी वो लाइफ लॉन्ग उससे कर पाएगी. I had spoken to some of the nutritionists about this, और उन्होंने भी यही बोला कि घी is important, but then don't make it your don't add ghee in everything like rotis. Still I was, even my mom, she knows how much I despise ghee in rotis. She would like lather a layer of ghee on my roti and I would not eat it. कहीं ना कहीं जो पुराने लोगों की बातें होती हैं वो शायद ठीक होती हैं कि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं खानी, लाइक द लड्डूज एंड एवरीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल हीलिंग ऑफ योर बॉडी. बट हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, और डोंट ओवर डू एनी थिंग, बी इट घी, डोंट ओवर डू. एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन लाइक माई फर्स्ट मंथ. आई जस्ट लेट इट गो. आई वुड लिसन टू माई एल्डर्स, एंड अब थोड़ा सा नाउ दैट आई एम 2 months postpartum, I'm doing me, I'm doing what feels right for me, and I'm eating what I should be eating. तो मैं अभी भी बाहर का खाती हूँ क्योंकि डेफिनेटली एक आदत तो बनी गई है प्रेगनेंसी टाइप से, बट अब वो बहुत कंट्रोल्ड होता है बिकॉज नाउ वट एवर आई ईट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द बेबी. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डाइट. आई हैव टू मेक श्योर आई डोंट ईट एनीथिंग विच इज़ वेरी अनहेल्दी. सो येस, अभी मैंने अपने आप को वेट नहीं करा है क्योंकि मैं अपने आप को वेट करने में बहुत डर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने वो 2 kgs पुट ऑन करे हैं तो उससे थोड़ा एक डर सा बैठ गया है. हाउएवर मैंने कुछ टाइम पहले एक जंपसूट ट्राई करा था जो उस आई थिंक अबाउट 1 week बैक. इट वॉज अ लिटिल टाइट फ्रॉम माई थाई एरिया, एंड आई वोर द सेम जंपसूट टुडे जो आपने मेरे वीडियो में देखा था ब्लू कलर का, और आज उसकी फिटिंग वैसी है जैसी होनी चाहिए. सो आई एम ग्लैड. आई थिंक कुछ तो शायद काम कर ही रहा है, शायद कुछ मेरी बॉडी मेरे को शायद रिवॉर्ड दे रही है शायद. सो येस, आई एम, इट मेक्स मी फील लाइक आई एम काइंड ऑफ समवेयर ऑन द राइट ट्रैक. तो या on this note I would like to end my video today. थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो गई, बट I really appreciate अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो और आपने मेरी बातें समझी भी हों, और शायद मुझसे थोड़ा बहुत रिलेट भी करा हो. If yes, then do leave a comment for me, and also I would love for you to subscribe. It would mean a lot to me, and keep sharing as much as possible, and I shall see you all in the next one. Bye.